So, welcome guys to the second lecture of Unit 1 and we shall now be talking about national income. Well, आपने बहुत सारी definitions national income की हैं, but जो definition मैं आपके लिए अब ला रहा हूं, यही आपके लिए सबसे apt रहेगी अगर आपको आपके कोर्स की रीडिंग्स को अच्छे से समझना है तो. Let's start. National income is a measure of factor earnings of domestic factors of production both from economic territory and from abroad. Well guys, यहाँ पर कुछ points हैं जो हमारी attention मांगेंगे. For example, what is factor earnings? Well, factor earnings are those which we earn in return of a good or a service. In return of a good और अ सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कोई गुड बेचा और बदले में आपने मुझे पैसे दिए, या मैंने आपके लिए कोई सर्विस की और आपने मुझे बदले में पैसे दिए. फॉर एग्जाम्पल सैलरीज, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज फैक्टर अर्निंग्स. आपको याद रखना है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम वी आर सपोज टू टेक ओनली फैक्टर अर्निंग्स. नो ट्रांसफर अर्निंग्स शुड बी टेकन. Examples of transfer earnings are scholarship, old age pension, pocket money. These are those so-called incomes which you receive but you do not earn. In national income, we are concerned with only that income which is earned. Therefore, we talk about factor earnings. What is economic territory? This one. Economic territory is also known as domestic territory. Well, geographical territory administered by the government within which people, goods and capital circulate freely. Geographical territory administered by the government within which people, goods and capital circulate freely. अगर मैं इसको डिटेल में आपको बताऊं तो इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपने पुराने क्लासेस में. फर्स्ट वन, territory lying within the political frontiers of the country including territorial water and airspace. Territory lying within the political frontier of the country including territorial water and airspace. आपने दूसरा पढ़ा, ships and aircraft etc. operated by residents between 2 or more countries. आपने तीसरा पढ़ा होगा, embassies, consulate, military bases etc. located abroad but excluding the foreign ones located within its political frontiers. And आपने चौथा पढ़ा है, fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms operated by residents in international waters or other areas over which our country has exclusive rights. Well guys, ये सब ठीक है, मगर शॉर्ट में आपने बोलना है economic territory is basically anything which is taking place in your country. बिल्कुल सिंपल रखेंगे आप. Economic territory is anything which is taking place in your country. Well, the best measure of national income is called GDP. So what is GDP? Well, GDP is the market value of all final goods and services. Market value of all final goods and services newly produced in an economy during a fixed period of time. Mind it, second hand goods आपको नहीं लेने. Well, there are 3 methods of measuring national income, which are income method, expenditure method and product method. अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल सिखाऊंगा बेटा जिसके थ्रू I will prove that all these 3 methods, income method, expenditure method and product method are going to give you the same answer. Now guys, we have got one example here. With the help of this example, I will be proving that all 3 methods, income method, expenditure method and product method will always give you the same answer. Let us start. We assume that there are only 2 firms in an economy. Let's name them as Orange Ink and Juice Ink. We have got certain transactions for both the firms. For example, Orange Ink pays wages equal to 5,000, tax equal to 3,000. It sells oranges to the public worth 20,000 and to Juice Ink worth 30,000. Juice Ink pays wages as 3,000, tax 2,000 and it sells the juice to the public worth rupees 55,000. So first of all, I'm gonna take income method in this example. Well guys, if you look at this example, the first form of income which I can think of is wages. From here it is 5,000, from here it is 3,000. So total income in the form of wages is 8,000. Next, if we assume that we are dealing just with 2 sector model,
That means no government involved. So there will be no role of tax. Now the second type of income in this example seems to be profit. So let me calculate profit of both the firms. Orange Ink, the total revenue, guys, is 20,000 plus 30,000 minus the expense, which is 5,000. 20,000, 30,000 minus 5,000 tax we are not considering, as we are, for now we are assuming it is a two-sector model. Later on we'll be using this as well in three-sector model. This profit is for Orange Ink, right? What about Juice Ink? The total revenue, I guess, is 55,000 minus it has actually purchased oranges worth 30,000 from Juice Ink. That you need to subtract, and it has paid wages 3,000. So this is the profit for Juice Ink. Now if I solve it further, 20 plus 30, 50 minus 5, that's 45,000. What about this? It is coming up as 22,000. 55 minus 30, that makes it 25, minus 3, 22. So what is the total income in terms of profit? 40, 60, 65 and 67,000. Here I would say in this example the total income of the economy in terms of wages and profit equals 75,000. Now if you want to consider it as a three-sector model, then your wages would still be same, that is 5,000 plus 3,000, that's 8,000. What about the profits? Well guys, the profit for Juice Ink, or rather Orange Ink, which was 45,000, don't you think it will reduce? It will be reduced by 3,000 because you have paid 3,000 as tax. So I am taking it 42,000. What about the Juice Ink? Well, the profit actually was 22,000. If you subtract a tax of 2,000 from this 22,000, you will be left with 20,000, and this total profit shall be 62,000. Now there is one more form of income, that is tax, and we will consider this tax as income of the government. So take the tax. Well, government receives its income, that is tax, 3,000 from Orange Ink and 2,000 from Juice Ink. So it makes it a total of 5,000. Now if you add all of these items together, guys, you still have 75,000 as your total income. So in this simple example, so far we have seen that income method is giving us an answer which equals 75,000. Now we will, in this particular example, teach you product method. Now guys, in this example, we will be looking at the product method. This product method is also known as production method and output method as well. Well guys, in product method, we go for GDP as value of output minus intermediate consumption. Where intermediate consumption primarily refers to intermediate goods, raw material, as they say. So what about Orange Ink and Juice Ink? Well, as far as the Orange Ink is concerned, what is the value of output? Well, I guess the value of output is 50,000. This is 50,000, 20 and 30. What is intermediate consumption? Primarily intermediate consumption is like using inputs, raw materials. In this example, I don't see any raw material being used, so I write a 0. So GDP, or the value addition for Orange Ink, is 50,000. What about Juice Ink? What is the value of output? Well guys, it is 55,000 value of output minus intermediate consumption. Mind you, these intermediate consumption are the inputs. Well, I think Juice Ink, in order to produce that juice which it has sold to public for 55,000, it has actually used input in the form of oranges, which this firm has purchased from Orange Ink worth 30,000. So guys, what we are left with here is 25,000. Now
This is the value addition of oranging 50,000. This is the value addition of juicing 25,000. Adding them together and we get 75,000. If you remember, in income method, whether it was 2 sector or 3 sector, our answer was 75,000. Now I shall teach you that this same 75,000 has to come even with the third method, that is called expenditure method. Let's start expenditure method, guys. Then it is a priced scalp. Trust me, if you get this, you will be having a good command over this chapter. So in order to actually understand expenditure method, first you must know that there are 4 sectors in an economy. The first sector, we call it household. The second sector, we call it firm. Third one, we call it government. And fourth one, we call it rest of the world. Well, household, well, their main function is to do consumption. Well, consumption of what? Well, three types. A, durable goods. B, non-durable goods. And services. Well, don't you think, guys, we as household, if we buy a refrigerator, it's gonna be a durable good. If we, buy a food article, it's gonna be a non-durable good. And services, obviously, we also use services. What about the firm? Well, their main function is to do investment. I repeat, their main function is to do investment. Well, most of the guys don't actually know the meaning of investment. आइए investment का मतलब जान लेते हैं पहले. कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं. आई एम अफ्रेड बैंक में पैसे इन्वेस्ट नहीं होते, बैंक में पैसे सेव होते हैं. कुछ लोग कहते हैं हमने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर लिए. आई एम अफ्रेड स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट नहीं होते, उसको स्पेक्यूलेशन कहा जाता है. तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या है? वेल गाइस, इन्वेस्टमेंट जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो 3 टाइप की होती है. BFI, RI एंड II. ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं. BFI स्टैंड्स फॉर बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. इसका एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी. रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी नए नए हाउसिंग यूनिट्स बनाना. इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक, दैट शुड इंक्लूड रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड एंड फाइनल गुड्स अवेटिंग सेल. What about the government? Well, government does both. That is, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है. जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. मिड डे मील जो गवर्नमेंट स्कूल्स में खर्चा करते हैं. इन्वेस्टमेंट, वेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल रोड्स. ये जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है इसको हम बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट. गाइस, क्या बोलते हैं? पब्लिक इन्वेस्टमेंट. और जब हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इन दैट वी विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. दैट कंप्राइजेस ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. What about rest of the world? Well, it is not in our syllabus. We'll be doing it in 3rd semester of economics honors. So for now we can just leave it like this. It is equal to net exports. Now, as far as your reading goes, वो सिर्फ याद करवा देंगे, रटवा देंगे. तो मैं पहले रीडिंग वाला तरीका आपको करा देता हूं जो कि रटने का तरीका है, और उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताता हूं जिससे आप और बेहतर तरीके से इसको क्रैक कर पाएंगे. बट अगर रीडिंग के तरीके से हम जाएं तो आपकी रीडिंग कहती है दैट दिस CIGNNX, so that will be equal to GDP is equal to C plus I plus G plus NX. And if I go with the example, what will be the C? I think C here will be non-durable good. Well, public ने, household ने oranges consume करे हैं कितने के? 20,000 के. So consumption is gonna be 20,000. ना सिर्फ पब्लिक ने नॉन ड्यूरेबल गुड इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंज लिया है, बट इफ यू सी इन्होंने इन द फॉर्म ऑफ जूस भी लिया है. हाउस होल्ड ने जूस भी खरीदा है एंड दैट इज वर्थ 55,000. एंड आप देख लीजिए टोटल 75,000 अगेन.
Now you will ask, sir, what about the investment? What about the government spending? Well, my dear friends, in this particular example, I can't see any business fixed investment like purchase of plant and machinery or any residential investment or inventory investment. If it would have been there, I would have loved to take that. But if it is not there, how can I take it? Government, well, there is no government expenditure either in the form of consumption expenditure. I should write consumption expenditure, or investment expenditure. Well, there is none, and there is no rest of the world sector as well. So this is how we get this 75,000. Income method 75,000, product method 75,000, and expenditure method as well 75,000. मैंने अभी आपको बताया था ये रीडिंग का तरीका है, मैं आपको इस तरीके से बेहतर तरीका बताता हूं यही चीज प्रूव करने के लिए। तो उसके लिए हम आपको सिखाते हैं। अब मैं इसी में एक कुछ ऐड करूंगा आपके लिए। Well guys, this C can also be written as CD plus CF. Well, CD stands for consumption on domestic goods, the goods which have been produced in your own country. CF stands for consumption on foreign produced goods. What about I? This is also equal to ID plus IF. What about G? Well, G is also equal to GD plus GF. We just will not be taking this for now. So, if C is equal to CD plus CF, so let me give you one idea. Don't you think whatever output you produce in your economy, it will either be sold domestically or in foreign? See, कुछ भी बनाइए आप आपके देश में, संतरे बनाते फॉर एग्जाम्पल, तो आपने जितने भी संतरे बनाए वो कुछ आपके डोमेस्टिकली बिकेंगे और कुछ फॉरेन में बिकेंगे। सो मेरे बच्चों, योर आउटपुट विच वी कॉल इट एज वाई और जीडीपी, डोमेस्टिकली अगर बिकेगा तो उसको आप क्या बोलोगे? सीडी, आईडी, जीडी, दैट इज कंजम्पशन ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड, इन्वेस्टमेंट ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड, एंड जीडी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। नाउ अब कैसे हम कहें कंजम्पशन कैसे होगी? कंजम्पशन ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फॉर सम फर्म्स ये संतरा एक इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर सकता है, सपोज स्टॉक है उनके लिए वो। गवर्नमेंट के लिए कैसे स्पेंडिंग होगी? गवर्नमेंट मिड डे मील के फॉर्म में संतरे दे रही है बच्चों को। एक्सपोर्ट अगर फॉरेन करेंगे तो फिर उसको आप क्या बोलोगे कि एक्सपोर्ट हो जाएगा। नाउ बी शार्प, बी स्ट्रीट स्मार्ट बेटा। इफ C is equal to CD plus CF, don't you think CD is C minus CF? If C is equal to CD plus CF, then CD should be equal to C minus CF, and that is what I'm gonna do. CD as C minus CF. Similarly, ID as I minus IF, GD as G minus GF plus exports. And now guys, C, I, G, and this exports here, and C, F, I, F, G, F one side. So CF consumption on foreign produced good, IF investment on foreign produced good, GF government spending on foreign produced goods. Due to the crunch, due to the space crunch, I'm gonna write the conclusion somewhere here for you guys. Here. So don't you think copying it from here, GDP should now be equal to C plus I plus G, C plus I plus G plus exports minus CF, IF, GF collectively should be called as imports, or you can write GDP is equal to C plus I plus G plus net exports. And this is the main thing. This is how you should be understanding it. आपका रीडिंग सिर्फ रटवा रहा है, थ्योरी लिखवा देता है वो कि भाई ऐड कर दो जीडीपी हो जाएगा C plus I plus G plus NX. This is how you can understand. अरे कुछ भी आउटपुट बनाओगे या डोमेस्टिकली बिकेगा या फॉरेन बिकेगा, फॉलो दिस एंड you'll be able to get expenditure method. याद करो 12th क्लास में कैसे करते थे एक्सपेंडिचर मेथड? जीडीपी ही नहीं करता था, जीडीपी एमबी। पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओनली दिस पार्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वेल उसमें ये भी आ जाता था और ये भी आ जाता था। वहां पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते थे, आप लिखते थे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में A, B, C और पब्लिक इन्वेस्टमेंट आ जाती थी, और फिर आप उसके बाद फोर्थ आइटम लेते थे नेट एक्सपोर्ट्स। हाँ मुझे पता है आप कहेंगे सर एनडीपीएमपी भी लेते थे, अरे वो सिर्फ ग्रॉस और नेट का ही तो फर्क था, मेन तो जीडीपीएमपी ही लेते थे ना आप।
वही है यहां पर भी। इट इज जस्ट दैट हम यहाँ इन्वेस्टमेंट लेते हैं। 12th क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट ना बोलकर इसको बोला जाता था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके अंदर ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ जाती थी और गवर्नमेंट की पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी आ जाती थी। पर अभी आपको ये इस तरह से समझना है। सो विद दिस एग्जाम्पल वी हैव एक्चुअली प्रूव्ड कि तीनों ही मेथड आपको हमेशा सेम आंसर देंगे। अगर ये शॉर्ट में आ जाता है व्हाई ऑल दी मेथड्स गिव सेम आंसर, तो मैंने अपनी बुक में इसका शॉर्ट आंसर भी दिया हुआ है और ये एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मेरी बुक से पढ़ सकते हैं। एंड आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। इन केस फिर भी डाउट रहेगा तो आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी एंड टेक योर डाउट्स। गाइस, अभी हमने न्यूमेरिकली सीखा कि प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब जब आप आपकी रीडिंग्स पढ़ेंगे तो आपको अगला टॉपिक जो मिलेगा वो मिलेगा प्रोडक्ट अप्रोच टू मेजर जीडीपी एमपी। वेल, इस पे हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस। वेल, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एक व्यक्ति के पास गया और मैंने बोला कि आपकी जीडीपी क्या है, आपके देश की जीडीपी। तो वो बोला कि जीडीपी क्या होता है। मैंने बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोला वो क्या होता है। मैंने कहा भाई कितने गुड्स एंड सर्विसेज की आपने कितने की बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज करी। तो अब अगर वो ये बोले कि मैंने 10,000 गाड़ियां बनाई हमारी इकोनॉमी ने, 40,000 जूते बनाए, 50,000 अलग अलग टाइप की सर्विसेज दी, डोंट यू थिंक इट इज सो कम्बरसम। तो हम क्या करते हैं, हर चीज की मार्केट प्राइस ले लेते हैं और उनको ऐड कर लेते हैं। So that is the advantage of taking GDP at market price. That is, it allows us to take the value of all goods and services irrespective of their nature. क्योंकि ये सभी एक कॉमन मेजरमेंट है इनका मनी, और सभी का मार्केट प्राइस आप लेते हो, उनको ऐड कर लेते हो और वो आपको दे देता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अच्छा, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स इन टेकिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस? यस, सर्टेनली। पहली प्रॉब्लम है देयर आर सो मेनी नॉन मार्केटेड गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, तो वो सर्विस तो हो रही है लेकिन क्योंकि वो मार्केट के लिए नहीं है इसलिए वो जीडीपी में काउंट नहीं होती, क्योंकि जीडीपी में हम वही ले रहे हैं जिन गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट प्राइस है। सेकेंड, एक्सटर्नैलिटीज भी इसमें काउंट नहीं हो पाती। कोई अब एक्सटर्नैलिटीज क्या है? वेल, व्हेन एक्टिविटीज ऑफ वन रिजल्ट्स इन बेनिफिट और हार्म टू अदर्स, व्हेन एक्टिविटीज ऑफ वन रिजल्ट्स इन बेनिफिट और हार्म टू अदर्स विद नो पेमेंट रिसीव्ड और पेमेंट मेड फॉर द हार्म डन और द बेनिफिट रिसीव्ड। तो बेसिकली एक्सटर्नैलिटीज भी काउंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आपके घर के आसपास फैक्ट्री है, पॉल्यूशन कर रहा है बहुत ज्यादा, तो वो पॉल्यूशन जो है वो आपकी एक्टिविटी, आपकी इफेक्टिवनेस को कम कर रहा है, बट स्टिल वो काउंट नहीं हो सकता। सिमिलरली फ्लाईओवर बना, उससे आपका टाइम कम हो गया जाने का, वो जो बेनिफिट है वो मार्केट प्राइस के अंदर नहीं आ सकता। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, ये ध्यान से सीखिएगा। सपोज गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल है, आपको इतना पसंद आया, आपने कहा मुझे ये हॉस्पिटल खरीदना है। आप बताइए क्या आप ये खरीद सकते हैं? नो, बिकॉज इट डजंट हैव अ मार्केट प्राइस। तो अब सवाल ये उठता है, पर सर अगर कोई नया हॉस्पिटल गवर्नमेंट बना रही है तो गुड और सर्विस तो बना है ना, इकोनॉमी में प्रोडक्शन तो हुआ है ना, तो फिर हम क्यों ना लें सिर्फ इस बेसिस पर कि मार्केट प्राइस नहीं है उसका। तो याद रखें, इन दिस केस जो इसका सोल्यूशन है वो ये है कि इट इज टू बी टेकन एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फिर कई बच्चे कहते हैं तो सर ये तो फिर मार्केट प्राइस तो है नहीं, आप क्यों ले क्यों रहे हो? तो आप बताओ, जीडीपी एमपी भी सिर्फ एमपी ही आपको ट्रैक कर रहा है क्या? जीडीपी की डेफिनेशन क्या थी? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो न्यूली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस भी तो देखो ना भाई, न्यूली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस है, प्रोडक्शन हुआ है, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक इट एट इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कुछ आप में से ज्ञानी लोग बोलेंगे तो ऐसे तो हाउसवाइफ ने भी प्रोडक्शन करा, वो भी तो ले सकते हो। अरे कैसे ले सकते हो? आप घरों में लोगों के की होल में झांकोगे कि क्या प्रोडक्शन हो रहा है, अंदर कैसे हो रहा है, यू जस्ट डोंट नो। व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट थिंग, तो उसका पूरा टेंडर पास होता है, उसका पूरा डेटा होता है, यू हैव द पेपर ट्रेल विद यू जो आप यूज कर सकते हो। तो प्रोडक्शन हुआ है, उसको मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ले रहा हूं। फर्स्ट केस में मुझे ये तो पता है प्रोडक्शन हुआ है, बट आई एम रियली नॉट श्योर कितना हुआ है, और कुछ उसमें एक्टिविटी ऐसी हो सकती है जो नॉन इकोनॉमिक है बाय नेचर।
अब आते हैं बेटा 4 पॉइंट अंडरग्राउंड इकोनॉमी। वेल अंडरग्राउंड इकोनॉमी में दो तरीके की ट्रांजैक्शन आती है, एक जो कंप्लीटली इलीगल हो, दूसरा जो लीगल हो लेकिन आप शो नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्रग्स वगैरह का काम करते हो वो इलीगल है, तो ऑब्वियसली अब आप एक्टिविटी तो कर रहे हो बट वो आएगी नहीं क्योंकि मार्केट प्राइस है नहीं उसका। और दूसरा जिसको हम कहते हैं कि आप टैक्स सेव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, इंस्टेड ऑफ पेइंग थ्रू चेक आप कैश से पेमेंट कर देते हो। क्यों? क्योंकि पेपर ट्रेल रन है, गवर्नमेंट की नजर में ना हो आप। तो अब आप बताइए, ऐसे केस में एक्टिविटी तो हुई है ना, और उसको आपने पैसे भी दिए हैं, इनकम भी अर्न हुई है किसी की, लेकिन वो गवर्नमेंट की नजर में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो पेपर ट्रेल नहीं है, आप उनका मार्केट प्राइस शायद नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल घर में आपके सफेदी करने वाला आया, आपने उसको 500 रुपए दे दिए, तो सर्विस तो हुई है मगर वो किसी रिकॉर्ड में नहीं आ रही है। तो ऐसे केस में जो नेशनल इनकम बनाते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट्स ही ले पाते हैं, जिसको आप 12th में कहते थे इंप्यूटेड वैल्यूज। सो बेटा, what is the advantage of taking GDP at market price? It allows us to take the value of all goods and services irrespective of their nature. Are there any problems in taking GDP at market price? Yes, non-market goods and services आ नहीं पाते, externalities cases आ नहीं पाते। goods and services जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस होता है उसको हम उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर लेते हैं, और अंडरग्राउंड इकोनॉमी के केस में हम सिर्फ एस्टिमेट्स ही ले पाते हैं। इनकी डिटेलिंग आपको मैंने नोट्स में दी हुई है, आप मेरे नोट्स में से पढ़ सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने अपने नोट्स में कुछ क्वेश्चंस के आगे हार्ट साइन लगाया है, तो जिस भी क्वेश्चन के आगे हार्ट साइन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप बाय हार्ट कीजिएगा, बाकी ऊपर ऊपर से आप पढ़ सकते हैं।